Hello everyone, in this video I'm going to tell you what does a consultant really do. So when I was with BCG, there used to be a case or a problem statement for a client, and in our terminology we used to say कि एक नया case आया है. So the case could be client wants to increase the sales by 5x in next 5 years or 10 years. It can be that company wants to enter into a new market and you have to devise a market strategy. You have to define which market should they enter, with what economics, and वो market के अंदर what all products should they target, what would be the economics, etc. So एक problem statement होता है. Once that problem statement is defined and वो पूरा engagement letter sign हो जाता है, then a team is assembled. So एक तो हो गया कि केस पहले हमने क्लाइंट को सेल किया कि हम आपके लिए ये काम करेंगे. दिस इज डन एट अ वेरी सीनियर लेवल. जो सीनियर पार्टनर्स होते हैं फर्म में वो ये सब करते हैं. वंस द केस इज सोल्ड, देन अ टीम इज मेड. सो द टीम स्ट्रक्चर लुक्स लाइक देयर इज अ पार्टनर, देन देयर वुड बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और यू कैन कॉल इट एज एंगेजमेंट मैनेजर. बीसीजी में उसको प्रोजेक्ट लीडर बोलते हैं, और यू कैन कॉल इट प्रिंसिपल, बट देयर वुड बी समवन हु वुड बी मैनेजिंग द इंटायर प्रोजेक्ट. देन वो मैनेजर के नीचे पूरी टीम होती है विच इज़ मोर लाइक एन एग्जीक्यूशन टीम. वो टीम में कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट्स, एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट्स, ये सारे लोग होते हैं, एंड दीज आर द पीपल हु रियली एग्जीक्यूट द डिफरेंट मॉड्यूल्स. Once the team is assembled, the entire case or the problem statement is broken into different parts. So let's say if the module is client wants to enter into a new market and you have to make a strategy. तो फॉर श्योर एक मॉड्यूल बनेगा प्रोडक्ट मॉड्यूल, कि ये वाले स्पेस में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड ये दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट क्लाइंट शुड टारगेट. अनदर मॉड्यूल वुड बी जीटीएम स्ट्रैटेजी, कि प्रोडक्ट तो बन गया बट क्लाइंट को मार्केट में कैसे एंटर करना है, सेल्स कैसे करनी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी. तो एक जीटीएम मॉड्यूल हो गया आपका. अनदर मॉड्यूल कैन बी कि लाइक डिपेंडिंग अपॉन वट एवर वी हैव सोल्ड, बट इट कैन बी समथिंग like geography, what all geographies should the client target. So ऐसे करके 2-3 मॉड्यूल्स डिफाइन कर देते हैं, एंड every person is independently responsible for that particular module. And then timelines are also decided कि ये मॉड्यूल का फर्स्ट डिलीवरेबल हमें आफ्टर 2 वीक्स देना है, 3 वीक्स देना है, सेकेंड मॉड्यूल का डिलीवरेबल आफ्टर 4 वीक्स देना है, 5 वीक्स देना है, as the case may be. Now once the team is made, then the work starts. So there are डेली स्टैंड-अप, वीकली मीटिंग्स, मंथली मीटिंग. जो डेली स्टैंड-अप होते हैं वो मैनेजर और एग्जीक्यूशन टीम के बीच में होते हैं. सो इन द मॉर्निंग और मे बी इन द इवनिंग. सो इफ इट इज़ इन द मॉर्निंग दे विल डिसाइड ओके दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे, एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू सेट द प्रायोरिटीज, एंड मैनेजर को पता रहे कि कौन क्या कर रहा है और क्या टाइमलाइन है. इवनिंग स्टैंड-अप में दे टेल ओके दैट्स व्हाट वी हैव डन सो फार एंड व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट इज डन, एक्सेट्रा. एक होता है वीकली मीटिंग्स. वीकली मीटिंग्स में आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, एग्जीक्यूशन टीम प्लस पार्टनर, बेसिकली वी प्रेजेंट टू पार्टनर वट एवर वी हैव डन सो फार इन द वीक. इन BCG we used to call it as CTM, which is case team meetings. So that's the weekly meeting. Monthly meetings जो होती हैं वो क्लाइंट के साथ होती हैं. We go to client place और client comes to our place. इट इज़ कॉल्ड SCM, विच इज़ स्टीयर को मीटिंग. सो जो स्टीयर कमेटी मीटिंग होती है उसमें क्लाइंट के सीनियर फोक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर ये मार्केट एंट्री वाला केस हमने सेल किया है तो उनके CXO लेवल लोग होंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग हेड, ये सारे लोग हैं, प्रोडक्ट हेड, जो डिफरेंट बिजनेस यूनिट के हेड्स हैं वो सब लोग होंगे. एंड वो सारे लोग जो होंगे उनके सामने हमारा पार्टनर एंड हमारी टीम प्रेजेंट करेगी वॉट एवर वी हैव डन सो फार, वॉट इज़ आर नॉट कंक्लूजन बट लेट्स से व्हाट इज़ अ रनिंग आंसर, कि हमने इतना एनालिसिस किया है, हमारे हिसाब से ये प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना चाहिए, दिस शुड बी अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, दिस इज़ द रनिंग आंसर एंड दैट इज़ व्हाट कमिंग आउट. एंड वी कैन, एंड उसमें लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स गेट डिस्कस्ड कि लेट्स से वी आर रनिंग बिहाइंड द टाइमलाइन और वी आर रनिंग अहेड ऑफ टाइमलाइन. तो काफ़ी चीज़ें बदल भी सकती हैं वो मीटिंग्स में. लेट्स से कोई मॉड्यूल हम एक पर्टिकुलर तरीके से ड्राइव कर रहे हैं बट द क्लाइंट सेज कि नो, मे बी दिस इज़ नॉट द राइट वे, वी शुड थिंक ऑफ इट इन अ डिफरेंट वे. So accordingly we might need to incorporate those inputs and again start working on them. So usually that's how the structure looks like. Sometimes ये मैं आपको बहुत usual structure बता रही हूँ in terms of meetings and the team. Sometimes when the case is very small, when I say small, a small team is required and the timelines are very strict. Let's say 4 weeks case, 5 weeks case. Then instead of monthly SCM कभी कभार 2 हफ्ते में भी एक बार SCM होता है, because case ही एक 1-1.5 महीने का है. तो client wants to catch up
लाइक फ्रिक्वेंटली कि क्या चल रहा है, वेयर आर वी एक्सेट्रा, तो वो भी हो सकता है. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द केस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एंड द नंबर ऑफ टीम मेम्बर्स रिक्वायर्ड फॉर द केस. लाइक आई हैव सीन द केसेस जिसमें वो केस में ही 6 डिफरेंट टीम्स होती हैं, विच मीन्स 6 डिफरेंट पार्टनर्स, एंड अंडर एवरी पार्टनर देर इज़ लाइक इंटायर टीम स्ट्रक्चर दैट आई जस्ट टोल्ड यू. सो इट डिपेंड्स कि कितना बड़ा केस हमने सेल किया है. आफ्टर all of this, like all of these things happen, then once your case gets over, तो बीच में ना एक यूजुअली एक हफ्ता खाली होता है बिफोर यू गेट एलोकेटेड टू अ न्यू केस, दैट इज कॉल्ड बीच पीरियड. यू एंड समटाइम्स पीपल कॉल इट एज दैट यू आर ऑन द बेंच. So whenever a consultant say that okay I am on bench, which means that he is not allocated on any of the case, or he can say that I am on my beach period. तो अभी कोई केस एलोकेट नहीं है, एंड यूजुअली 2 केसेस के बीच में फॉर अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस 1-2 हफ्ते का गैप ये लोग रखते हैं. So that's what a consultant usually do in day-to-day life. One of the good part is we work every day, we interact with team a lot, our team changes frequently, and in order to like bond within our team, we usually have fortnightly dinners or maybe like once in 2 weeks. And wo dinner mein it's like usually people don't talk about work and they just play some games, just discuss interesting stuff that they do outside work. So it's a very good conversation, like 2-3 hours when everyone bond with each other. Sometimes when your case is more than 3 months or 6 months, then you also go for a case team offsite, which is called CTO. उसमें वो आपकी सिर्फ टीम घूमने जाती है, आपकी टीम में से ही कोई वो पूरा CTO ऑर्गेनाइज करता है. इट्स अ सॉर्ट ऑफ वेरी intimate bonding setup, and it's really too much fun. I really love that. And annually there is one offsite जिसमें पूरा ऑफिस मिलता है, and they all meet, there's some function, there's some party going on. So that these are all the perks of consulting that you would have heard of. So yeah, that's what a consultant does in day-to-day life. If you want to know more about consulting, let me know in the comments, and I'll see you in the next video. Bye bye.